This is Nisha, and today we are going to have a very important topic, that is imperative negative sentences. Students, in the last videos we had already covered this topic, but in that I did not tell you how to form imperative negative sentences. So let's first understand what is imperative sentences. So just to remind you, imperative sentences are those sentences by which we make request, advice, or we make an order. So when we make requests, we say please do me a favor. If we make an order, then we say go and sit there. And if we make any kind of advice, then we say do it on time. So when we make positive sentences of imperative, so basically we use verb first form in the beginning of the sentence, and we speak such sentences to the person जो हमारे ठीक सामने होता है. So today we'll talk about the negative sentences of imperative sentences. So students, how can we make negative sentence? So इसमें कुछ भी नहीं करना है. In the beginning, before the main verb, जो हम main verb लगाते हैं उसके पहले हमें do not यूज़ करना है. एंड डू नॉट के अलावा हमें कोई और हेल्पिंग वर्ब या कोई और ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज़ करनी है. सो सपोज इफ़ वी हैव टू से तुम वहाँ मत जाओ, या फिर हम कह रहे हैं मत जाओ इट मीन्स नहीं जाओ. सो विल से डू नॉट गो. सो हियर द एग्जाम्पल इज़ परेशान मत हो. सो डोंट वरी. डू नॉट ईट इन द क्लास में तुम मत खाओ, या फिर क्लास में मत खाओ. देन नेक्स्ट इज़ never walk alone at night. So students, one more thing here I have added, that apart from do not we can use never in place of do not. So अगर हम do not नहीं use कर रहे हैं and we are using never, then we will not use not or do, because never is itself complete negative sentence. अगर हमने never लगा दिया है then we will not use do not. दी अदर थिंग नेवर मीन्स कभी नहीं. सो अगर हम किसी से कोई काम कभी नहीं करने को कह रहे हैं देन वी विल यूज़ नेवर. सो सपोज नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो. नेवर गो देयर, दैट प्लेस इज़ सो डेंजरस. सो दिस वे वी विल ईजिली मेक द सेंटेंसेज इन imperative negative sentences. So students, I hope that you must have understood this topic, though it is really very easy, but I thought of repeating it because somewhere it may be your confusion, because when I make the worksheets or exercises for you, so such sentences also will be in the same exercises. So thank you students. Children, take care. Bye bye.